రాజ్యసభ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి. రైట్ నౌ లైవ్ లో చూద్దాం. సార్, అమరావతిలో నిర్మాణ వ్యయాన్ని చూడండి సార్. ఢిల్లీ, కలకత్తా, బెంగళూరు, చెన్నైతో పోల్చుకుంటే ఎక్కడైనా సరే సుమారుగా నిర్మాణ వ్యయం చదరపు గడికి 4,000 నుంచి 5,000 రూపాయలు ఉంటుంది సార్. కానీ అమరావతిలో ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఫైనలైజ్ చేసిన టెండర్స్లో సార్ ఫస్ట్ స్క్వేర్ ఫీట్కి 12,000 రూపాయల నుంచి 13,000 రూపాయల రేట్లు ఫిక్స్ చేశారు సార్. ఉచితంగా ఇది కూడా సార్, ఉచితంగా నీరు, విద్యుత్ ఛార్జీలపై రాయితీలు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ వ్యయం అంతా కూడా ఈ డబ్బు ఎక్కడికి పోతుంది సార్? ఈ డబ్బు ఎవరి జోలులో వెళ్తుంది సార్? ఇది అవినీతి కుంభకోణం కాకపోతే प्लीज सब कंक्लूड करिए उनका नेक्स्ट. जय जगन्नाथ सर. निरंजन बिशी. थैंक यू सर. First of all, I support the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026. But sir, while discussing reorganization, we cannot ignore the ground reality. आपको जो समयावधि दी गई थी वो कंप्लीट हो चुकी है. Our border region, especially in Odisha, which should result for national integrity. आपका नोट किया जाएगा निरंजन जी. कोटिया issue, a question of sovereignty and identity. सर, दी कोटिया ग्राम पंचायत इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आपका टाइम कंप्लीट हो गया. वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए. कंटिन्यूअस एनक्रोचमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस फ्रॉम आंध्र प्रदेश. एक मिनट निरंजन जी, दिस इज प्लीज. नॉट 1 मिनट माइनर बाउंड्री डिस्प्यूट. निरंजन बिशी 1 मिनट, आधा मिनट में, हाफ मिनट, या हाफ मिनट. Finally, the resolution on the basis of which bill is brought here before the they moved and adopted in the AP Legislative Assembly, sir. It was not adopted in the Legislative Council, sir. That is without following the legislative procedure, sir. Sir, this clearly indicates there is a big drama about this bringing this bill, sir. So with these submissions, our YSR Congress Party opposed this bill, but the reasons mentioned in the beginning and in protection, we are walking out, sir. Thank you, Thank sir. you. Next, Sri Niranjan Bishi. Niranjan Bishi. जय जगन्नाथ. Thank you, sir. First of all, I support the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill. Please. Sir, प्लीज आप बैठिए. Sir, आप बोलिए. Sir, it is highly unfortunate and very, very shameful, sir. I've stated all the facts regarding Amravati and the emotion behind it. And the whole nation is supporting, sir. Even the opposition, India Alliance, everyone is supporting in the interest of the farmers, in the interest of the women, and in the interest of the state of Andhra Pradesh. It is such a shameful act that the party which comes from Andhra Pradesh itself is opposing and walking out on such a historic day. It is really, really very unfortunate, sir. नेक्स्ट स्पीकर श्री निरंजन बिशी. हाँ यस साहब, अब आपसे आप जब बोलेंगे तब आपसे शुरू होगा टाइम आपका. Based on hypothetical false statements, sir, please ask them to authenticate, sir. Please remove lot of these. जो अमर्यादित है, तथ्य विहीन है, ऐसी किसी भी शब्द को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा. निरंजन बिशी जी का समय अब शुरू होगा. Sir, Jai Jagannath. Thank you, sir. First of all, I support the 5 bill. minutes. Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill, I support. But, sir, while discussing reorganization, we cannot ignore the ground reality faced by border region, especially in Odisha, which should be resolved for national integrity. Sir, first is Kotia issue. Sir, the Kotia Gram Panchayat in Koraput district of Odisha has been witnessing continuous encroachment and administrative interference from the state of Andhra Pradesh. This is not a minor boundary dispute, sir. This is about India's federal structure being tested at the grassroots level. More than 21 tribal villages belonging to Odisha under the Potangi block of the Koraput district are being claimed, administered and influenced by Andhra Pradesh government. Tribal people are being influenced, divided and politically manipulated, sir. Second problem is our Polavaram project.
Sir, the Polavaram Dam project have become a symbol of development without justice. Total affected person 3 lakhs, and out of which 2 lakhs belongs to ST/SC family. They have been identified for displacement. This project have impact 300 tribal villages in the district of Malkangiri of Odisha state. Sir, while it is declared a national project, its consequences are disproportionately borne by Odisha and Chhattisgarh. Thousands of tribal families in Malkangiri of Odisha face displacement, submergence of forest land, livelihood and cultural identity is imminent. Rehabilitation and compensation remain inadequate and unclear. Sir, interstate dispute must be resolved through consultation, not confrontation. Odisha wants cooperation and coordination, good relation with Andhra Pradesh in the field of education, health, trade development, etc. Because Andhra Pradesh is our neighboring state of Odisha, and we have good relation with Andhra Pradesh. People of Odisha, we, particularly Western Odisha and KBK, we depend upon Andhra Pradesh. And lakhs of our laborers, they are every year migrating to Andhra Pradesh. And in the health matter, they are going to Vizag, Valtier, Visakhapatnam because of good health facilities. So I demand permanent resolution of Kotia dispute through constitutional and judiciary clarity is required. Comprehensive impact assessment of Polavaram project involving Odisha, it must be seen. Legally binding rehabilitation framework for affected tribal population of both Kotia and Polavaram, that should be resolved. Protection of state right under federal structure must be done. I urge the government respect Odisha's territory integrity, safeguard tribals' right, and ensure that development does not become displacement. Thank you, sir. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय यादव जी, 3 minutes। सर, जब आज द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे जो चर्चा हो रही है, तो इस चर्चा के दौरान मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और देश को आज से सही 26 साल पहले ले जाना चाहूँगा। तब 25 अप्रैल 2000 को बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे 9 घंटे की एक चर्चा हुई थी। तो उस दौरान ये बात हुई थी और केंद्र की उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी, आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो बिहार पुनर्गठन बिल 2000 में यह स्पष्ट प्रावधान था कि बिहार की क्षतिपूर्ति के लिए एक विशेष वित्तीय प्रबंधन किए जाएंगे। और उस वक्त बिहार की आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी और बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार के लिए 1,79,900 करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की थी। और उस विशेष वित्तीय पैकेज की महोदय उस वक्त की सभी समता पार्टी, जो कि एनडीए का एक सहयोगी दल थे, नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, उन्होंने भी हमारी इस मांग का समर्थन किया था। तो महोदय, लेकिन क्या हुआ, बिहार के बंटवारे के बाद बिहार को वो 1,79,900 करोड़ रुपए नहीं मिला और आज तक नहीं मिला। महोदय, ये ऑर्गेनाइजेशन पे बात हो रही है, मैं रीऑर्गेनाइजेशन पे बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूं कि आज की एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश और बिहार के दम पे चल रही है, ये संतुष्टि है हमें। और ये मैं टीडीपी के साथियों को बधाई भी देना चाहूंगा कि विगत दो साल में ये आंध्र प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता राशि लेके गए और आज इन्होंने इस केंद्र सरकार को मजबूर किया है कि रीऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करा रहे हैं अपने भले के लिए। लेकिन हमारे बिहार के साथी क्या कर रहे हैं, उनको एक मखाना बोर्ड दे दिया, उसमें खुश है। जो पहले से मखाना बोर्ड चालू था बिहार में, तो उनको टीडीपी के साथियों से सीखना चाहिए, जेडीयू के साथियों को। उनका तो जो मुख्यमंत्री थे उनको भी अब हटा के ये लोग दिल्ली लेके आ रहे हैं। तो कम से कम टीडीपी के साथी बधाई के पात्र हैं। और एनडीए के साथी, हमारे जेडीयू के साथी श्री संजय झा जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास मौका है, टीडीपी से सीखने की जरूरत है कि आपने बिहार को उस वक्त 1,79,900 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता राशि का वादा किया था, वो अब आपको लेना चाहिए। और अब मैं, जैसे आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को रिविजिट किया,
अब आप राजधानी के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन महोदय, इसमें एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कल को किसी दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, वो फिर रिविजिट करेंगे, वो कहेंगे कि इसको बना दो। तो इसके लिए जब आप राजधानी की बात करते हैं तो एक रेफरेंडम की बात होनी चाहिए, एक जनमत संग्रह होना चाहिए कि लोग कहां चाहते हैं कि किस राजधानी चाहिए। और इसी माध्यम से मैं फिर आपसे पुनः कह रहा हूं कि जो बिहार का बकाया 1,79,900 करोड़ जो 2000 में एनडीए की सरकार ने वादा किया था, वो अब आप दीजिए। आपने समय देने के लिए महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद।